Now someone has asked me कि ma'am repo rate same repurchase जैसा work करेगा, it will work as similarly. Explain NSE in M4. I've explained this National Savings Certificate. It's kind of saving bonds, which is done in the post office in order to ensure कि income के अंदर से some amount of money is saved. Ma'am, in reverse repo rate, if there is reverse repo rate के अंदर ऐसा होता है कि RBI is extracting the money out of the economy. अगर वो extract कर रहा है money out of the economy और उसके बदले rate of interest दे रहा है, and if the reverse repo rate has increased, तो मतलब he is borrowing more from the bank, and therefore it will lead to fall in the liquidity and the money supply will reduce, क्योंकि वो ज़्यादा amount जो है वो borrow करेगा बैंक से and bank will fall short of the money. I hope Vidhi this is clear to you. LM framework के अंदर हमने yesterday we have seen that LM framework involves demand for money. Why money is demanded? Money is demanded for the transitory motive and speculative motive and as well as precautionary motive. अगर हम ट्रांजैक्टरी मोटिव पे मतलब मनी डिमांड कर रहे हैं, इट इज बिकॉज कि उसकी वजह से इनकम इंक्रीज है तो हम उसकी वजह से डिमांड कर रहे हैं, और अगर हम डिमांड करें मोर मनी अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अफेक्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव मोटिव. और रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दो इंडिकेटर्स होते हैं जो LM कर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब इन दी एंड विल ड्रॉ की इन्वेस्टमेंट रेट अगर ज़्यादा है, मतलब अगर लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा करेंगे. एंड दिस इज व्हाट द LM कर्व सेज. It explains the relationship between rate of interest and income. Explain qualitative measures again. Qualitative measures we can see. You can see this slide. Qualitative measures. क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर ऐसा था कि यहाँ पे ऑल द मेजर्स विल नॉट बी बेस्ड ऑन एनी क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल इट विल नॉट बी बेस्ड लाइक CRR रेशियो हैज इंक्रीज्ड or CRR रेशियो has decreased. It is the basic guidelines which are given by the RBI to the central bank. RBI कोई भी central bank को है, for example your parents says to you don't use your phone, but you don't stop using your phones, you use your phone, right? So these are the guidelines which is made. तो क्वालिटेटिव मेजर हुआ. क्वालिटेटिव मेजर में फर्स्ट तरह की गाइडलाइन क्वालिटेटिव इंडिकेटर हो गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट. अब बैंक्स ने, अब सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोल दिया कि इतना अमाउंट ऑफ कोलेटरल होगा तभी हम आगे लोन दें, वरना दे विल नॉट गिव लोन. कोलेटरल इज प्री-रिक्वेस्टेड फॉर हैविंग लोन, तो कोलेटरल का अमाउंट भी डिपेंड करता है डिसाइड करने के लिए कि हाउ द लोन विल बी गिवन बाय द बैंक. Then rationing of credit. Rationing of credit involves fixation of credit quotas for different business activities, which is introduced when the flow of credit is to be checked properly, particularly for speculative activity in the economy. हम credit को ration कर रहे हैं क्योंकि rate of interest बढ़ गया economy के अंदर, तो banks भी कोशिश कर रहे हैं they will spend more in the speculative market rather than giving rate of interest. तो credit को भी हम ration कर सकते हैं जब हम business एक्टिविटीज को appropriate लोन नहीं देंगे. Then there is moral suasion. Central banks बोल रहे हैं commercial banks को to follow particular guideline, वो उसको pressure भी कर सकता है, which should not be ignored by the members bank. The bank advised to restrict the flow of credit during inflation and liberal in lending during deflation. I hope it is clear now. Qualitative practice question from 10. Yeah, you should do that. You should practice question from your 10 years. But not just practice question from your 10 year. You can do it simultaneously. It is not the substitute. It should be complementary done.
See, in credit creation, if you have clearly stood by my example, then you would have understood that bank is not lending to bank. Bank is lending to the public. When suppose 10,000 is deposited by 1%, then 10,000 को कुछ reserve ratio अपने पास रखा, बाकी amount it has lent to the public in form of deposits. अब डिपॉजिट्स के टाइम पे पहले 9,000 लेंड किया, फिर CRR रेशियो जो भी चल रहा था उसको लेंड किया, फिर उसको फर्दर लेंड किया, बट लेंड बैंक को नहीं किया, इट हैज लेंडेड टू द पब्लिक, बट पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं आता, इट इज ऑलवेज डन इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. अगर डिपॉजिट की फॉर्म में किया है तो अकाउंट खुलेगा बैंक के अंदर. So accordingly that amount, that account proportional basis पे CRR रेशियो के बेसिस पे अमाउंट रेगुलेट क्रेडिट क्रिएट होगा इकोनॉमी के अंदर. Practical questions किस चीज की चाहिए? Practical you should try solving 10 years and you will get the practical applicability of the concept. What is difference between qualitative and quantitative measures? Qualitative measures जो होते हैं, it does not involve quantity, और quantitative measures के अंदर हमको क्या कहते हैं, effective control of monetary policy किया जाता है by controlling the tools. For example, CRR रेशियो को कंट्रोल कर लिया हमने, या फिर हमने रेपो रेट को कंट्रोल कर लिया, बट इन क्वालिटेटिव मेजर वी ओनली इशू द गाइडलाइंस और हाउ द सिस्टम इज टू बी परफॉर्म्ड. Galloping inflation means, you can see this slide. Creeping inflation में हुआ, inflation is between the price, inflation is between 0 to 9%. But galloping inflation के अंदर inflation rate is quite high, which can range between 10 to 1,000%. And this such high rate of inflation affects the money supply in the economy. If it's affecting the money supply, then it's extracting entire purchasing power from the consumers. So therefore, galloping inflation is quite dangerous for the economy, but the more severe one is the hyperinflation. Hyperinflation works more, the rate is more beyond 1,000%. I will ensure this notes yesterday class. I will tell you by tomorrow ki how this process will be done. Yeah, you will get the recordings, I'm sure. You will get the recording of yesterday class as well as this class. Exams बारे में you will get to know through the dashboard only. Creeping inflation is very slow inflation, मतलब it is a very mild inflation when the price rise range between 0 to 9%. मतलब इससे ज़्यादा होगा ही नहीं. It is very much necessary for economic development. Creeping inflation is very crucial factor, but it should ranging beyond from 9% is quite dangerous, but 0 to 9%, in fact 3 to 4% is quite healthy for the economy. So this is creeping inflation. High powered money ऐसा होता है, powered money के अंदर there is a certain liabilities which RBI has towards public. For example, if you open any note, it is always written that I promise to give the bearer a certain amount of money. So high powered money involves how much the cash is circulated in the economy, and this is what high powered money is. If you have any further question, you can post it right now.
Are there any further questions? I've got question that is monetary policy. Monetary policy. Okay, we'll discuss monetary policy once again. Monetary policy is क्या करते हैं? Monetary policy is used to control money supply and credit in the economy, जो कि which is done by RBI. RBI के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने, which involves qualitative and quantitative measures. Quantitative measures involves repo rate, reverse repo rate, SLR, और उसके बाद cash reserve ratio, SLR, and open market operation. These are the 5 tools which affects monetary policy. अगर ऊपर वाले 4, for example, cash reserve ratio, statutory liquid ratio, if the rate will increase and it will lead to fall in the liquidity. और open market operation में ऐसा होता है हम buys or sell of government securities कर रहे हैं in the open market. If we are selling it, supply of money will increase and liquidity will rise. If we'll buy, then flow of money will decrease and liquidity will fall. For just like buying something from the market, if you have 500 rupees, your cash will flow out. So buying flows money out, and selling something, for example, selling your phone or something, it will bring the cash flow in. This is what monetary policy quantitative measure, and qualitative measure involves marginal requirement, rationing of credit, and model situation. Marginal requirement refers to the difference between security offered for loan and the value of loan which is guaranteed. And rationing of credit involves selecting or fixation of credit quotas for different business activities. Model situation makes the member bank agree more through the persuasion or pressures follow its directive, which is generally not ignored by members bank. And this is what we call monetary policy. If there is anything, for example, yesterday we have discussed real GDP, nominal GDP, real interest rate. Then real word means which is adjusted for inflation. So always remember, if there is something which had a suffix of real, it is adjusted for inflation, it is adjusted for price level. Okay, I'll ask. You will get it in 1 or 2 in that SOL dashboard section only. हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? मैम क्लियर है, आप पढ़ा लीजिए।
ठीक है। मेरे से भी क्वेश्चन पूछा है जो सर, एक सेकंड, मेरे को एक चीज पूछनी थी। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स कब तक विजिबल होंगी? मैम 2-4 दिन में हो जाएगी, आप पढ़ा लीजिए वो। ओके सर, ओके, थैंक यू। In 2-3 days or 2-4 days, you'll get the recordings in that dashboard section only. सी लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कह रहे हैं कि हमारी कंट्री की करंट सिचुएशन है उससे कैसे रिलेट करेंगे, लाइक इट्स इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग। सी करंट सिचुएशन के अंदर मनी सप्लाई इज नॉट देयर, सो आरबीआई इज simultaneously issuing new monetary policies which involves changing rate of interest rate and repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR ratio जो कि काफी डिक्रीज की गई है आरबीआई की वजह से, ताकि मनी सप्लाई बूस्ट हो इकोनॉमी में। और अगर मनी सप्लाई बूस्ट कर रही है आरबीआई, तो यू शुड नो कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, वेदर इट्स इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग। आई वांट योर आंसर। मनी सप्लाई कब क्या कहता है आरबीआई इंक्रीज करता है इकोनॉमी में, किस सिचुएशन में? If you have any other question, you can post it. Someone asked me account से कोई और सब्जेक्ट की क्लास है, you can see that online class section and you will get to know कि क्लास स्टार्ट है या नहीं. You will get the schedule there only. If you have any other queries, you can post it. हाँ जी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, ऐसे मैम क्लियर हो गया आपका सेशन? हाँ जी सर। ओके, एंड कर दें? हाँ जी सर। ओके।